नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लोग अक्सर इन दिनों पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट इन दिनों ओवरवैल्यूड है। पिछले कुछ दिनों में इंडियन इक्विटी मार्केट में बुल रन चल रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओस भी लेकर आ रही हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स का यह कंसर्न होता है कि क्या मार्केट अभी ओवरवैल्यूड है या नहीं। आज के इस स्पेशल वायरल रिएक्ट्स एडिशन में हम मिस्टर अश्वथ दामोदरन के CNBC TV 18 के साथ हुए रीसेंट इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, जहां पर उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। मिस्टर अश्वथ दामोदरन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, जहां वो कॉर्पोरेट फाइनेंस और इक्विटी वैल्यूएशन जैसे की सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो चलिए पहली क्लिप सुनते हैं, जहां प्रोफेसर दामोदरन इंडियन इक्विटी मार्केट की मार्केट कैप टू जीडीपी पर कमेंट कर रहे हैं। You alluded to how India will grow. Okay, speaking of economic growth, I must get this question in about India's market cap to GDP. That at the moment is over 104 or 105. Historically, the Indian market cap is 80% of India's GDP. Now, the only time it traded at 100% of India's GDP was in FY08. So, should the current valuation ring alarm bells? I know Warren Buffett loves this market cap as a percent of GDP, but there are things that Warren Buffett uses that should not be used. This is a really bad metric. And here's the reason. India has historically been an economy driven by private businesses, family-owned businesses. That's the history of India. As countries increasingly incorporate and go to a trading market, that percentage is going to rise. So even if nothing changes about India, the market cap as a percent of GDP should keep going up, whatever you think about markets. There are other metrics you can point to and say, hey, Indian markets are overvalued. But that metric doesn't in the least bit convince me about anything about the Indian market. I think that are Indian investors being optimistic about the future? Yes. Are they being over-optimistic? That's, I think, something we can back out from the market and ask, is that a reasonable assumption to make about the future? जैसा कि आपने सुना होगा, प्रोफेसर दामोदरन के अकॉर्डिंग मार्केट कैप टू जीडीपी सही मेट्रिक नहीं है ये जज करने के लिए कि मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं या नहीं। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ड्रिवन रही है। जैसे जैसे ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट होंगी, लिस्ट होंगी और इनके स्टॉक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप बढ़ेगा और इसकी वजह से इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी भी बढ़ेगा। इसलिए ये मेट्रिक के इंक्रीज होने से हम ये जज नहीं कर सकते कि मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं या फिर नहीं। अब सुनते हैं सेकंड क्लिप, जहां प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन निफ्टी के करंट पी रेशियो पर कमेंट कर रहे हैं, जो कि अभी 20 से ऊपर है। Okay, I take your point about market cap to GDP. Let me use perhaps a metric that will be more acceptable to you. Price to earnings valuations. The Nifty is trading at over 20 times FY22 earnings. Historically, we have traded at probably 17 times at best. Now, does that make for worries of overvaluation? Lata, let me ask you a question. When we talk about PE, we act as if it's a fact. But it's always an estimate, right? Because what goes in the denominator is a judgment call. If I take 2020 earnings, I get a very different PE ratio than 2019. Normally with markets, you don't care that much. But at this point in time, you need to care. Why? Because 2020 was just an unusual year. So, we can make an argument based on PE ratios, but it's got to be based on something beyond last 12 months of earnings because we are in unusual times. And I would say this about every market in the world. The earnings in the last 12 months are not a great metric to scale up on because it reflects an economy that was shut down, at least for a portion of those 12 months. But I concede on your overall point. The multiple of earnings that Indian stocks are trading at is higher than it's been historically. I accept that as a fact. Let me ask you a follow-up question, though. What are interest rates in India like now relative to 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago? Investing is always about alternatives. And if you tell me that stocks are overvalued, I have a very simple question. You take your money out of stocks, where are you going to put it? Are you going to put it in bonds? See what you get at a local, Indians are very fond of fixed deposits and the rates you can earn on fixed deposits. Go check out what you make on fixed deposits now as opposed to 10 years ago, 20 years ago. Are you going to put it in real estate? Good luck with that. Indian real estate is just as pricey as stocks. So this is an argument that's not specific to India. I hear it all the time all over the world. Stocks look expensive.
But relative to what? Relative to history? I can't go back and trade history. I can't go back and buy stocks at 2010 earnings or prices. So I agree with you, they're expensive, but unless you show me that there are alternatives that are attractive, I'm stuck with what I have, not what I wish I had. प्रोफेसर दामोदरन ने यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है। उनका सबसे पहला पॉइंट यह है कि कोविड-19 के चलते 2020 एक अनयूजुअल ईयर रहा है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि सभी कंट्रीज के लिए, जिसकी वजह से काफी सारी कंपनीज की अर्निंग्स पर इंपैक्ट आया है। इसलिए लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग्स एक सूटेबल मेट्रिक नहीं है पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद मिस्टर दामोदरन कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में हमेशा ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें पूरी मार्केट को देखना चाहिए यह एनालाइज करने से पहले कि स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है या फिर नहीं। आजकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स काफी लो चल रहे हैं। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी 2018 में 8% से कम होकर अब 6.25% पर आ गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न्स भी काफी कम हो गए हैं, और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो वो भी इक्वली एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। इसलिए भले ही मार्केट्स ओवरवैल्यूड हो, जब तक इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, वो स्टॉक मार्केट्स में ही इन्वेस्टेड रहेंगे। अब सुनते हैं थर्ड क्लिप, जहां प्रोफेसर दामोदरन आने वाले टाइम में कंपनीज की हाई फॉरवर्ड पी रेशियोज पर कमेंट कर रहे हैं। Okay, now let me pick out some pockets and ask your opinion. Titan, for instance, is trading at 71 times FY23 earnings, not 22. Estimates, of course. Mind you, we have accounted already for the lower base and the big earnings jump this year. Likewise, Jubilant Food, the Domino's Pizza guys, is trading at 73 times FY23 earnings. Would these constitute, worrisome valuations? Oh, absolutely. I mean, in any market, at any time, you're going to get, and this is a particularly high, it's the way I describe it all over the world is investors are pricing in perfection. They're assuming that everything is going to work out perfectly. There's a plausible story I can tell, a plausible story for why you might pay 38 times 2023 earnings or 70 times 2023 earnings. But the key word is plausible. Investing should be about probabilities, not plausible stories. And around the world, investors seem to be betting on the plausible over the probable. And that has historically not worked out well for them. प्रोफेसर दामोदरन ये कह रहे हैं कि ऐसे अनयूजुअल हाई फॉरवर्ड पी रेशियोज की वजह इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म है। फॉरवर्ड पी रेशियो या फिर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो किसी भी कंपनी के करंट शेयर प्राइस को कंपनी की एस्टिमेटेड यानी कि फ्यूचर अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि इसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या उसकी फ्यूचर अर्निंग्स को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं। अब मानिए आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी फॉरवर्ड पी रेशियो काफी हाई है। इसका मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस कंपनी में सब कुछ बहुत ही स्मूथली जाएगा और उनको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसलिए हमें किसी भी आउटकम के बारे में सोचने से पहले सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो नहीं कंसिडर करना चाहिए, बल्कि कोई भी आउटकम कितना प्रोबेबल होगा उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सुनते हैं अगली क्लिप, जहां प्रोफेसर दामोदरन आंसर करते हैं कि ये बुल रन कैसे और कब एंड हो सकता है। Right, then what might puncture the rally? Will it be when the Fed starts tapering or the tapering actually begins? I'll tell you the best case scenario is that the world realizes that there is a disconnect here between what bond markets are saying and what stock markets are saying. Let me explain. Stock markets are suggesting a very strong return to growth and a very strong return of the consumer. That's what stock markets are saying. Bond markets are giving the opposite message: low growth, low inflation. There's a disconnect here. One of these markets has to adjust, and your best case scenario is that adjustment happens gradually. Your worst case scenario is that one day everybody wakes up and says, what the heck have we done? I mean, why are T-bond rates 1.5% when inflation is 3% and growth is 2%? That's when you get those massive corrections. So I think that the range of possible outcomes range here from a catastrophic drop to a kind of stagnant market for 3 or 4 years, but things adjust back. Let's hope for the latter over the former, because I think there is definitely a disconnect in markets. इस क्लिप में मिस्टर दामोदरन बोल रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स के बीच अभी एक डिस्कनेक्ट है। स्टॉक मार्केट्स अभी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं,
जो कि डायरेक्टली ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स आने वाले टाइम में हाई ग्रोथ और रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाई ग्रोथ का डायरेक्ट लिंक डिमांड से होता है और जैसे डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरी तरफ बॉन्ड मार्केट्स के लो इंटरेस्ट रेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ भी आने वाले टाइम में कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होने के बावजूद अगर इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इन्फ्लेशन रेट कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के बीच हमें यह डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन दोनों में से एक मार्केट को एडजस्ट करना होगा और जब ये एडजस्टमेंट शुरू होंगे तभी मार्केट्स में करेक्शन देखने को मिल सकता है। प्रोफेसर दामोदरन होप करते हैं कि ये एडजस्टमेंट ग्रेजुअली ओवर 3-4 इयर्स हो, अदरवाइज शार्प फॉल होने पर इन्वेस्टर्स एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ सकते हैं। और अब सुनते हैं आखिरी क्लिप जहां प्रोफेसर दामोदरन आने वाले फ्यूचर में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है उस पर कमेंट कर रहे हैं। Well, let me just come back to equity and some of the valuations. These bubble-like valuations, do you think, how long do you think they can continue? Suppose we both were to chat during Christmas time. Do you think the shape of the markets would be very different? Now, I try not to use the word bubble because once you use the word bubble, you attach irrational. You basically say people have gone crazy. They're insane. They're not rational, which allows you to stand on your ivory tower and look down on people and say, look at all those crazy people. The minute you do that, I think you're in trouble. I think I constantly work at trying to understand what's going on in markets. The question I ask myself, what am I missing? Now, when I see a disconnect, it doesn't make sense to me, but it doesn't mean that people have gone crazy. It might be that I'm missing something. So that's why I'm not a market timer. I'm still in stocks in spite of, I try to find the places in stocks where I think I can still get a reasonable return. But I think that's the problem if you go in with this perception that people have gone crazy, that this is a bubble. Historically, what that's meant is you get out of stocks, and because you don't have anywhere else to go, you sit on cash. You know how many people have been doing that since 2012? Because they've been expecting the bubble to correct, or next month, next quarter, next year. People have gone bankrupt doing it. And I am going to, I take a very karmic view of markets. It is what it is. Now, I can't change bond rates. I can't wag my finger at people and say, don't do that. I can just make the best decisions I can given what I see in markets today. So if you ask me what the most likely scenario is at Christmas, my guess is it's more of the same. Oh, okay. Because if everybody thought the likely scenario is a correction by Christmas, the correction is going to happen today, right? Okay. You never get a consensus on when a correction will happen because the correction will happen right away. प्रोफेसर दामोदरन कहते हैं कि वो मार्केट के साथ बबल वर्ड एसोसिएट करना पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसा करने पर हम मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हमें हमेशा यह समझने की कोशिश करते रहना चाहिए कि मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है जो हमें नहीं पता, क्या कुछ ऐसा तो नहीं जिसे हम मिस कर रहे हों। वो कहते हैं कि मार्केट कभी भी टाइम नहीं करते वो और हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं जहां से वो अच्छे रिटर्न्स कमा सके। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि बहुत लोग मार्केट्स को बबल समझ के एग्जिट कर देते हैं और फिर कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से कैश पोजीशन ले लेते हैं। ऐसे थॉट प्रोसेस की वजह से काफी लोग बैंकरप्ट भी होते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट का करंट सिनेरियो जो भी हो, हमें उसे एक्सेप्ट करके जो ऑप्शंस अवेलेबल है उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारा मोटिव करंट सिनेरियो में अच्छी अपॉर्चुनिटीज जैसे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ के डिसेंट रिटर्न्स अर्न करने का होना चाहिए। तो ये था करंट मार्केट सिनेरियो पर प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन का टेक। इन वीडियोस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सके जिससे आपकी इक्विटी मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग और भी एनहांस हो। आपके क्या व्यूज हैं इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। On that note, here's me, Groww, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.